तो आज आम फॉरेस्ट रिसोर्स विषय डिस्कस करबा। हैला फॉरेस्ट रिसोर्स होजी कोन तो फॉरेस्ट रिसोर्स होजी वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। तो फॉरेस्ट रिसोर्स हमर कोन ना नेचुरल रिसोर्स अंडर रे हमर अछि। नेचुरल रिसोर्स कोन ना जोटा हमर नेचुरली हमर डेवलप है कि जो रिसोर्स ता हमर नेचुरली डेवलप है दैट विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन। तो सेटा को हम कोन कहबा ना दैट इज द नेचुरल रिसोर्स। जेते कि हमर वाटर हे पारिबो, विंड हे पारिबो, देन हमर फॉरेस्ट हे पारिबो, सेटा हमर नेचुरल रिसोर्स। ओके तो फॉरेस्ट रिसोर्स ता हमर पुनिया में जेते जानि छु कि फॉरेस्ट रिसोर्स बा हमर नेचुरल रिसोर्स ता हमर दुईटा पार्ट रे डिवाइड हे छै बा दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड हे छै। कौन ना दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन ना दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके तो रिन्यूएबल रिसोर्स हमें कहा को कहबा ना जो रिसोर्स ता हम कोन ना बारंबार रिन्यू हे पारिबो। तो सेटा को हमें कोन कहबा ना दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। तो सेती तार एग्जांपल नेले हम कोन कहि परिबा रिन्यू को जिंस हे पारिबो। हमर फॉरेस्ट रिसोर्स हम रिन्यू हे पारिबो ना हे पारिबो हे पारिबो। कोन पाइना फॉरेस्ट हम जदी हम प्लांट हम अधिक रो अधिक हम लगे परिबा हम ओते फॉरेस्ट हम क्रिएट करि परिबा। तो सेटा रिन्यू हे पारिबो। हम बारंबार चाहिए हम फॉरेस्ट को हम क्रिएट करि परिबा। तो सेटा हम कोन ना रिन्यूएबल रिसोर्स रे जीवो। एंड फॉरेस्ट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम कोन कोथरे जीवो ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जोटा कि हम बारंबार हम ताको क्रिएट करि परिबा नाही बा जोटा हम कोन ना रिन्यू होबा पाई बा सेटा हम कोन पुनी थरे क्रिएट होबा पाई लॉन्ग पीरियड जोटा होची नो जी। तो सेटा को हम कोन कहि परिबा ना दैट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना नहीं। तो से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मैं एग्जांपल कौन दे पारेगा ना दैट इज द कोल और पेट्रोलियम है ना नहीं। तो कोल और पेट्रोलियम कौन पाई कहली ना आमे जानि छु हम अर्थ क्रस्ट रे हम कोल बा पेट्रोलियम बा बहुत सारा मिनरल्स खनिज पदार्थ जते सब होची को ना बहुत मात्रा रे प्रेजेंट अछि किंतु सेटा को ना दैट इज लिमिटेड। पुनी थरे से जिंस होबा पाई तयारी होबा पाई बहुत वर्ष दैट इज अप टू 400 to 500 ईयर लागि जाय सेटा हमरो रिन्यू होबा पाई। तो सेति पई हमर कोन ना हमो लाइफ पीरियड रे हमें पुनी थरे सेटा रिन्यू होबाडा केबे भी देखि परिबा नाही। तो सेति पई सेटा को हमें को कैटेगरी रे रखिले दैट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अंडर रे हमें रखिले। सेटा रिन्यू हेई पारिबो किंतु हमर लाइफ स्पैन दा सेति पई हमर कोन ना बहुत स्मॉल। तो सेति पई सेटा हम कोन ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैटेगरी रे हमें सेगुडा को रखिले। ओके देन नेक्स्ट हम डिस्कस करबो कोन ना हमें एटा बुझि गले। तो नेक्स्ट हम डिस्कस हमर फोकस कोन ना आज रो टॉपिक कोन ना फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स हम जानि ना जंती कि कोन ना फॉरेस्ट रिसोर्स इज आल्सो द रिन्यूएबल रिसोर्स। तो सेटा बारंबार तयारी हे पारिबो। तो नेक्स्ट हम देखिबो ना व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट रहिले आमे कोन से को बेनिफिट पाउ छु बा कोन आमे से को आनी के आमे यूज करि पाछु। तो दैट इज फर्स्ट हम कोन देखिबा ना व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट को हमें कोन पाउ छु। तो ता पूर्व हमें जानि छु कोन ना फॉरेस्ट को हमें कंसीडर करले हम माइंड रे सदाବେଳେ कोन आसे ना हमें फॉरेस्ट रो तर मेन बा इंपोर्टेंट जिंस हम कोन ना दैट इज द टिम्बर है ना नहीं। कोन पैना हम गछरो हमर कोन काठ खंडी हम पाई था तो सेटा को हम टिम्बर बोली कहि था। तो हम होछ कोन ना मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फॉरेस्ट इज दैट इज द टिम्बर है ना नहीं। हमें फॉरेस्ट को बेसिकली हम बहुत मात्रा रे कोन पाई था ना टिम्बर पाई था बा हमें काठ खंडी बोली कहि था। तो सेटा हम कोन ना फॉरेस्ट रो मेन सोर्स बा हम मेन इंग्रेडिएंट बोली हम कहबा दैट इज द टिम्बर। ओके नेक्स्ट हम देखिबा ना आउ कोन हमें जिंस पाउ बा आउ कोन कोथरे हमें बेनिफिटेड हे पारो छु थ्रू द फॉरेस्ट। ओके
first underline going on. First going on now that is variety of ingredient are available. Second was called used as where wood serves as habitat it is also serves as important